Now the firm's production function in the explicit form was when y is equal to f of z1 and z2. ठीक है, फर्म का प्रोडक्शन फंक्शन सिंपल फॉर्म में क्या था कि y is equal to f of z1 and z2 और अलाउिंग आउटपुट और इनपुट की इनएफिशिएंसी कब हो रही थी, जब y की वैल्यू जो थी वो लेस देन z1 and z2 थी. क्लियर? दैट इज एफिशिएंसी कब होगी, जब फर्म इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, और इन एफिशिएंसी कब होगी, जब इस लाइन के नीचे फर्म लाई करेगा. और ये एक्सप्लिसिट फंक्शन वी हैव स्टडीड इट इन डिटेल बिफोर दीज स्लाइड्स. Now when the firm produces more than one output, it is often more convenient to write the production function in the implicit form. Now we move on towards the implicit function. That is corresponding to two explicit cases. We have now our function that is y minus f of z1 z2 is equal to g of z1 z2 y is equal to 0. एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या बताता है, एक क्लियर हमारे पास मॉडल है y इज द फंक्शन ऑफ z1 z2. जब हम एक से ज़्यादा आउटपुट को स्टडी करेंगे हम इस मॉडल को कन्वर्ट कर देंगे एक्सप्लिसिट फॉर्म में. एक्सप्लिसिट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो f z1 z2 है ये शिफ्ट हो जाएगा टू द लेफ्ट हैंड साइड. When it has shifted to the left hand side, our function has become y minus f z1 z2, and this whole is now equal to a function g which has its variable z1 z2 and y, and it should be equal to 0. जब ये 0 के इक्वल होगा हमें पता है कि फिर क्या होगा, then when it is equal to 0 then we have efficient allocation of resources. When it is less than 0 then we have inefficient allocation of resources. Now the implicit and explicit forms are equivalent ways of describing the technical constraints on production, provided that we restrict the attention to economic region of explicit production function. That is, let's move to our next slide. Okay, we have so far talked of y as an output and z1 as an input and restricted both outputs and inputs to being non-negative. But what if हमारे पास ये कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाए, दैट इज बट व्हाट इज एन इनपुट फॉर वन. अगर सपोज करो सिंपल वर्ड्स में कि हमारा जो इनपुट एक फर्म के लिए जो है वो दूसरे आउटपुट के लिए दूसरी फर्म के लिए वो आउटपुट है, देन हाउ विल वी स्टडी द प्रोडक्शन फंक्शन. इससे पहले सिंपल क्या था, z1 z2 शुड बी सम पॉजिटिव नंबर्स एंड इट इज यील्डिंग अ पॉजिटिव अमाउंट ऑफ आउटपुट, दैट इज y. Now what we are studying, we are saying that suppose z1 is an input for the firm A, let's suppose, but z1 is an output for the firm B as well. इस situation को, इस तरह की situation को हमने पढ़ना है. Again let me repeat the statement. But what if an input for one firm is the output for another firm, or a firm may change from producing a good to using it as an input. ठीक है, क्या है, firm may change from producing a good to using it as an input, or it may use part of the output as an input. There are several different examples like this कि जो एक फर्म के लिए जो गुड इनपुट है वो दूसरे फर्म के लिए आउटपुट है. और अब हमारे पास फर्म्स जो है यही कर रही है कि वो अपना इनपुट जब चेंज कर रही है तो उसके लिए दूसरे फर्म का जो आउटपुट है वो चेंज होना चाहिए. क्लियर? Because जब वो output increase होगा तो this firm can now increase the input. Why? Because the firm A is using it as an input. To save the relabeling of the good, when this happens, it is easier to use the concept of the firm's net output of a good. ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने फर्म का net output study करना है. If the net output is positive, the firm is producing the good. If it is negative, then the firm is consuming it or using it as an input. In the start, I told you that we will come across some concepts. ठीक है, अब यहाँ पे net output को मल्टी प्रोडक्ट केस में कैसे यूज़ करना है, किस तरह से डिफाइन किया है. Let me repeat this statement once again, and it is very important. If the net output is positive, then the firm is producing the good. ठीक है ना, नेट आउटपुट की वैल्यू पॉजिटिव है, फर्म उस गुड को प्रोड्यूस कर रही है. इफ द नेट आउटपुट इज नेगेटिव तो उसका मतलब क्या है कि फर्म इज नाउ यूजिंग दैट गुड एज एन इनपुट रादर देन प्रोड्यूसिंग इट.
The firm's net output of good I will be written as the variable yi, which is not constrained to be non-negative. तो therefore इस केस में मल्टी प्रोडक्ट केस में अब हमने yi को लिमिट नहीं करना या रिस्ट्रिक्शन पुट नहीं करनी कि ये नॉन नेगेटिव होगा, दैट इज या ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा. नो, दिस विल नॉट बी द केस ओवर हियर बिकॉज द फर्म्स नेट आउटपुट ऑफ गुड आई विल बी रिटन एज द वेरिएबल वाई आई. अब ये वाई आई जो है टोटल आउटपुट नहीं है, ठीक है, इट इज़ नेट आउटपुट. अब ये जो हमारे पास यहाँ पे सपोज हमारे पास यहाँ पे वाई आई की वैल्यू है, ठीक है ना, सही. इसकी वैल्यू ग्रेट इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकती है, लेस देन ज़ीरो भी हो सकती है और ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो सकती है. अगर ये लेस देन ज़ीरो है हम ये कहेंगे द फर्म इज़ यूजिंग इट एज एन इनपुट. अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है हम कहेंगे द फर्म इज़ यूजिंग द फर्म इज़ प्रोड्यूसिंग दिस गुड. सो देयरफॉर now when we move forward we say that if yi is greater than 0 good I is produced or supplied by the firm. ठीक है. And okay, let me just rub this. ठीक. If yi is greater than good, good I is produced or supplied by the firm. If yi is less than 0, good I is consumed by the firm. And if yi is equal to 0, then हमारे पास क्या होगा, जो नेट आउटपुट की डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है कि ये गुड जो है ना कंज्यूम कर रहा है फर्म, ठीक है, एज एन इनपुट, ना ही इसको प्रोड्यूस कर रहा है. Using this labeling, we can rewrite the implicit production function in the general case as g y1, y2, y3, y4 and so on till yn is equal to g of y less than equal to 0. ठीक है. With y is equal to y की y जो है वो y1 से स्टार्ट हो रहा है, किसी फाइनाइट नंबर ऑफ पुट्स तक जा रहा है yn. It is now defined as the net output vector. ठीक है. ओके, नाउ यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टर्म यूज हुआ है. द वाई आईज आर समटाइम्स रेफर टू एज नेट पुट्स, NET, नेट PUTS पुट्स. वाई? बिकॉज ये हमें ये डिटर्मिन करके दे रहा है कि फर्म जो है वो नेट जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी बेस पे हमें ये बता रहा है कि इधर फर्म इस गुड को एज इनपुट यूज़ कर रहा है या एज आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है. If g of y is less than 0, there is output inefficiency. ये पूरा फंक्शन जब लेस देन 0 होगा आउटपुट इनएफिशिएंसी क्यों होगा? बिकॉज वो जो सिंपल डायग्राम मैं हमेशा आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि है ना, इफ़ g of y is less than 0 इसका मतलब ये है कि फर्म जो है इस रीजन में प्रोड्यूस कर रहा है. तो देयरफॉर देयर इज आउटपुट इनएफिशिएंसी इफ g of y is equal to 0. अब g of y की बात हो रही है, सिंपल y की बात नहीं हो रही, इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, g of y is equal to 0 इस पॉइंट पे, तो आउटपुट एफिशिएंसी होगी. A technical infeasible net output vector is indicated by g of y greater than 0. इस रीजन में ये जो ऊपर इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स लाई करें यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेक्निकल इनफीजिबल नेट आउटपुट होगा. दैट इज फर्म इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड इन एट एनी ऑफ दीज पॉइंट्स. यहाँ पे ये जो मैंने ऊपर डॉट्स ड्रॉ किए मैं इनकी बात करें, दीज आर दी इनफीजिबल सेट्स. इनसाइड दिस लाइन जितने भी है वो फीजिबल सेट्स हैं. यहाँ पे इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी और यहाँ पे ऊपर वाले जो पॉइंट्स है, सपोज दिस इज बी, ए पे इन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, बी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता. और इस कर्व पे जिस भी पॉइंट पे फर्म प्रोड्यूस करे, लेट सपोज इट इज सी, सी जो है वो हमें जी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, तो देयरफॉर आउटपुट इज आल्सो एफिशिएंट. नाउ नोटिस दैट एन इंक्रीज इन वाई आई मीन्स इफ आई इज एन इनपुट, वाई आई जब इंक्रीज हो रहा है, अगर वाई आई इनपुट होगा, दैट इज वाई आई की वैल्यू नेगेटिव होगी, द यूज ऑफ इनपुट हैज़ बीन रिड्यूस्ड. ठीक है, नेगेटिव वैल्यू जितनी हम, सपोज द वैल्यू ऑफ वाई आई इज इंक्रीजिंग, ठीक है, और वाई आई जो है वो लेस देन 0 है, -2 कर दो इसको, ठीक है. द यूज़ ऑफ द इनपुट हैज़ बीन रिड्यूस्ड. जब ये -2 से -3 हो जाएगा तो ये और कम हो रहा है ना इसकी वैल्यू, जितना माइनस की वैल्यू आगे जा रही है बेसिकली इट इज़ डिक्रीजिंग. तो देयरफॉर द यूज़ ऑफ इनपुट जो है वो रिड्यूस हो रहा है.
clear? yi is measured along the negative part of relevant axis if it is an input. अगर ये input है तो फिर अगर yi की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब ये है कि इस इनपुट की वैल्यू जो है, इस इनपुट को कम से कम यूटिलाइज किया जा रहा है। बिकॉज जब इसको आप नेगेटिव एक्सिस पे स्टडी करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आ जाओगे